inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles. Good morning YouTube. Today we are going to Tosh. We'll be leaving from the hotel now. We'll be checking out within a moment and we'll be going to Tosh. And this is the last place we are going to visit. I don't think in 4 days of trip we cannot complete the whole Kheer Ganga. If I could make it 1 week, I could have completed it, because yesterday's trek was quite hectic for us and today we took a bit of rest. So we'll be going to the place, and before that we'll be visiting Manikaran Gurudwara. That's an awesome place. I hope I get great footages of the place. So let's go. Review us on booking.com, please. Well, we just stayed over here and this is the manager of the hotel. Hello. And it's a beautiful place, you can see over here, and the food is also good, so I would give it a good rating. You can also stay here and this guy will definitely help you out. So guys, this is the Kasol market. Not much to see, as usual it is. I'll buy some stuffs from here. कितना करके भैया ये सब कितना? 200 रुपये। 200 रुपये। ये वाला कितने का आता है? ये 1200 इतना क्यों बना रहा हूँ? ये लेदर का है भाई। थोड़ा कम करो, इतना ज़्यादा क्यों? 1150 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इजरायली को बिकता है, फॉरनरों को 2000 का है। लाया बना रहा हूँ। हमको ये वाला दे दो, 1000 रुपया लो, ठीक है? कौन सा ये वाला? हाँ 1100 दे दो बस। नहीं टाइम है मेरा। अरे इतना मत लो यार, इतना हम भी तो खरीदारी करते हैं। ठीक है, फॉरनरों को बिकता है 1500 का भाई। ये वाला एक दे दो और ये वाला हमको एक दे दो। हाँ भैया, कौन सा वाला माला लेना आपने? देखो ये वाला एक दो, ये एक दो, ठीक है? फिर 1200 रुपया ले लो, ठीक है? हाँ 1200 नहीं यार। हाँ तो ये तो 200 का बोला तुमने, तो ये 1000 और 1200 दे दो, ठीक है? हाँ। Guys, I needed to buy some stuffs. That is why I came to the market. Right now we are going to Manikaran, so I'll see you over there. So guys, we are just parked at Manikaran Gurudwara and you can see a pagri on my head. So I will be visiting the place and showing you great footages of the place. Let's go. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. So as you can see guys, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहना खाना अगर आप चाहो फ्री है. So definitely there is no worry of cost and it's a great holy spiritual place of Sikh. Just have a look on this place. Beautiful. And it's such a peace, you know, to stand in this place. और ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, वहाँ से गर्म पानी निकलता है पूरा. I will take you inside of this place. Let's go. Chale. Guys, we are just entering the Gurudwara. यहाँ से हम लोग जाएंगे गुरुद्वारा साहिब के पास.
driver is also a Sikh, and he told not to open up shoes over there, rather to open up here. अब जूता यहाँ पे खोलना पड़ेगा, यहीं पे रख देते हैं। अच्छा, जूता फिर रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे खाने को कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में ये लोग खिलाता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने का भी जगह है यहाँ पे, तो बढ़िया जगह है। मैं यहाँ पे थोड़ा बैठूँगा शांति से अभी, फिर विल बी गोइंग टू तोश। तो अभी हम असली मंदिर के सामने हैं। यहाँ पे अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप लोग बाहर से देख लो। बढ़िया जगह है, शांति से आओ, बैठो, टाइम दो, बढ़िया है। तो अभी मैं अंदर जाएगा, कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा यहीं पे समाप्त, फिर मिलता है। ओके, सो आई गॉट परमिशन to enter with my camera over here, but not go nearby to that place where the prayer is going on. So I'll stay calm and just enjoy the place, guys. It's a beautiful place, a hell lot big, awesome, simply awesome. तो अभी हम जाके थोड़ा माथा टेकेगा। बढ़िया जगह है, यहाँ पे पूरा खुला मैदान, जितना चाहो बैठो, अपना समय दो, यहाँ पे समय बिताओ, बढ़िया जगह है। I'll sit for some time in peace, enjoy my time over here, and after this I will go to Tosh, so I'll see you in Tosh. But before that, just enjoy some video shots. तो गाइस, ये है मणिकरण का लंगर खाना। यहाँ पे सब अनाज का स्टोरेज है, यू कैन सी। इतना खाना तो पूरा गांव खा लेगा ना, लेकिन यहाँ पे पूरा गांव ही खाता है हर रोज। इतना सारा आदमी को खाना दिया जाता है। एंड सबसे बड़ा बात यह है, ये लोग अभी तक धर्म को लेके जो बिजनेस है, बहुत सारा मंदिरों में चला हुआ है, बहुत सारा जगह पे हम देखते हैं। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कुछ, मतलब दूसरा बात है। मगर यही चीज़ अच्छा लगा कि जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो यहाँ पे आके खा सकता है, जिसके पास रहने को जगह नहीं है वो यहाँ पे आके रह सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट गुरुद्वारा इज़। इट्स सिंपली ऑसम, इट्स अ पीस ऑफ योर माइंड अल्टीमेट। सो राइट नाउ आई विल जस्ट हैव सम फूड एंड उसके बाद रवाना होंगे तोश के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। आज सो के उठने में थोड़ा लेट हुआ है, बिकॉज ऑफ यस्टरडे ब्रेक। चलो, तो भैया अभी हम पी रहे हैं चाय, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ, तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आओ तो कुछ ना कुछ खा के जाना पड़ता है। तो मैं अभी चाय पीऊँगा, तो उसके बाद चलेंगे। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल चाय। अभी हम लोग जा रहे हैं गर्म गुफा की तरफ, ये रहा। तो यहीं से मेरे को गर्मी महसूस हो रहा है, बहुत गर्म है। इधर है संदीप भाई, इधर है। ये है गर्म गुफा। जा सकते हैं आप, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुश है, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। अरे जाइए, क्या दिक्कत? बहुत गर्म है भाई, अंदर तो रहा नहीं जाना है भाई। बंदा लोग बैठे हुए हैं कैसे पता नहीं। मैं तो नहीं जा रहा अंदर।
Well guys, right now I'm at Manikaran Sahib bridge and this is Parvati river, the same which was flowing in Kasol. This one is also the same because this is the whole thing is the Parvati Valley. And just have a look of this unimaginable beauty, man. Whew. So today the middle destination was Manikaran. Right now we are going for the top. So I'll see you up there. Let's go. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So guys, we have reached in Tosh, but it's quite a bad weather, you can see. And this is not where we are going to live. We have to climb up the hill and get to the top of this hill, and there is the Paradise Resort where we are exactly heading. We are just on our way to our hotel. Great view from here, but I hope the clouds are going to move away very soon, because in this kind of cloud I cannot see any scenic beauty. I hope the rain stops by tomorrow. At least I can get a proper day off.
गाय माता साइड दे दो. चलो जो भी है. Beautiful place. I'll be reaching my destination within a moment. So see you tomorrow, guys. Well, good morning to you guys. We are done with our vlog, and today is the last day of our stay because I'm leaving the hotel at 11 o'clock. I have got train Kalka Mail at 1 o'clock, 1:20 from Chandigarh. Well, I've got to catch my train, and it is at 1:20 from Chandigarh to Howrah. So this is the last day, and this is the weather right now. You can see behind me, completely covered up with clouds. The whole Tosh is completely covered with clouds. And yeah, in order to get to this resort, this is Paradise Resort, and this is the topmost resort you can find in Tosh. It took me a bit of effort to come here, but let me tell you, it was a satisfaction after coming here and looking at this view. It's simply breathtaking, and it is the topmost resort of Tosh. I would recommend you guys to come over here. There is also a renowned cafe over there, just over there. That is Pink Floyd Cafe. First of all, I planned to live over there, but then certainly I saw that there was another resort available on the top of the hill, so I went for this one with taking a bit of risk, but risk is worthy. It's a great view. Food is also good over here. The home, the service is also good. So overall, good experience. And this is not the last time I'm coming to Himachal, because in 4 days no one can complete Himachal. It's quite impossible. So I'll be coming once again to Himachal, but not in the same places. Guys, if you like the video, then kindly just give it a thumbs up and subscribe to my channel, The Bong Adventures, and I'll see you on the next vlog. Thank you.